NCI online class, and this is your biology class. Students, today we will continue with the chapter 8, food production. And today we are going to start the new unit, that is unit 2, agriculture. Unit 2, agriculture. Unit 1 we already discussed in our previous class, and today we are going to discuss the unit 2, agriculture. So students, what is agriculture? Actually, the practice of growing crops for consumption is known as agriculture. And India has always been प्राइमरली एंड एग्रीकल्चर कंट्री. शुरुआत से ही हम इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री के रूप में जानते हैं. एंड एग्रीकल्चर वाज नोन टू द पीपल थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो. हमेशा से ही लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानते आए हैं. दिस इज क्लियर फ्रॉम द ruins of the Indus Valley civilization, that is known as the city of Mohenjo-daro. और उस समय पे क्या था, the carbonized grains of the wheat and barley and the grinding stone was discovered in the Indus Valley civilization. Indus Valley civilization में ही इन सब चीज़ों की डिस्कवरी हुई. स्टूडेंट्स, ऋग वैदिक टाइम्स में जो इस टाइम पे जो एग्रीकल्चर होता था, जो प्लांटेशन हुआ करता था, कैसे होता था? ऋग वैदिक काल में टाइम्स में एक्चुअली वुडन प्लग्स का यूज होता था. एंड वुडन प्लग्स आर पुल्ड बाय द ऑक्सन एंड बुल्स. जो ऑक्सन और बुल्स होते हैं वो उसको पुल करते थे उस वुडन प्लग को. एंड देयर आर फरोज आर मेकिंग बाय द प्लग्स. उस वुडन प्लग से फरोज बनाए जाते थे. उन फरो में ही सीड को शोन किया जाता था. और देन आफ्टर द मैच्योरेशन पीरियड द सीड्स वाज कट and stacked and trussed and winnowed. These are the processing of growing a crop. ये सारी प्रोसेस हैं किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एज द टाइम पास्ड, द एग्रीकल्चर केप्ट ऑन प्रोसेसिंग. नाउअडेज 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन आर एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चर. अब क्या है, लोग या फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, दे ग्रो द क्रॉप्स इन देयर फील्ड, देन दे सेल देयर क्रॉप्स टू द to other peoples who are businessing which are related to the agriculture. वो भी indirectly एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी फार्मर्स से वो पूरी क्रॉप्स को परचेज कर रहे हैं. देन दे आर सेल टू द शॉपकीपर्स. नाउ शॉपकीपर्स आल्सो सेल दीज प्रोडक्ट्स टू द नॉर्मल पीपल्स. सो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. ठीक है, कि वो क्या है, किसी भी तरह से एग्रीकल्चर से ही उनका जो बिजनेस है वो रिलेटेड है उससे. So 70% of the peoples of our country are directly or indirectly related in the agriculture field. Okay, students. In broader sense, we can say agriculture is the science of growing plants and raising animals यूजफुल टू ह्यूमन्स. जो भी यूजफुल ह्यूमन के लिए यूजफुल है, उन एनिमल्स को रेज करना, उन प्लांट्स को ग्रो कराना, दिस इज नोन एज एग्रीकल्चर. And agriculture includes the cultivation of lands and breeding of management crops or and animals. मतलब किसी जैसे कि हैंस है, हैन है हो गए, या फिर हैन किसका प्रोडक्शन करते हैं, एग का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर काउस को मतलब जो ब्रीडिंग कराना, ब्रीडिंग ऑफ काउस एंड ब्रीडिंग ऑफ द हैंस इज ऑल्सो इंक्लूड इन द एग्रीकल्चर. क्योंकि ये भी क्या है, यूजफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, तो ये सब भी एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लैंड वेयर द प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज फील्ड. उस लैंड को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फील्ड. इफ वी विजिट अ फील्ड ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स इन अ ईयर, एक साल में अलग अलग सीजन पर अलग अलग टाइम पर हम किसी फील्ड में विजिट करते हैं, देन वी फाइंड द फार्मर्स परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज. अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए हमें फार्मर्स नजर आते हैं. जैसे कि sometimes when we visit the field, the farmers are preparing their field for the plantation के लिए अपने field को prepare कर रहे होते हैं. And on another times they are irrigating the fields, means give the water to their field. At the other times they are harvesting the fields. जब crops mature हो जाती है तो वो harvest कर रहे होते हैं, manuring कर रहे होते हैं, irrigation कर रहे होते हैं, या फिर फील्ड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं. इस तरह से अगर हम किसी फील्ड में विजिट करें इन द डिफरेंट सीजन ऑफ अ ईयर, देन वी सी द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अ फार्मर विच आर डूइंग इन द फील्ड. अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए हम फार्मर्स को देखते हैं.
And once the crop ready to mature, the farmers harvest them and store and distributed, उन क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. दैट इज these all activities of the farmers which are doing during the plantation, during the growing a crop is known as एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. इन सभी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या आता है? दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. जैसे कि showing sheets, irrigating. इरिगेशन भी क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है. हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, ये सारी चीजें क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आती हैं. सो इफ यू हैव एवर सीन a tractor in a field means you have seen one of the most important machine which are used by the farmers for growing a crop. किसी भी क्रॉप ग्रो कराने के लिए फार्मर्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट मशीन होती है दैट इज नोन एज ट्रैक्टर. Okay students, farmers use all the kinds of machinery to make the job of growing crops ईजियर. ईजी तरीके से किसी भी क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए कई तरह की मशीन्स का वो यूज़ करते हैं. द टूल्स विच आर रिक्वायर्ड इन कैरिंग आउट द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. वो सारी जो मशीन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, नाउ द टाइप्स ऑफ crops. Students, what is crops? Actually, the plants that are grown and cared for in the field for obtaining useful products and food items are known as crops. वो कोई भी प्लांट जो कि हम फील्ड में ग्रो करा रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं फॉर obtaining the useful products, for obtaining the food are known as crops. And crops are of several types. So crops are there are several types of crops based on the food, based on the types of food which we obtain from the crop. The crops are of various types. Like इन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स. तो क्रॉप प्लांट्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि होते हैं पल्सेस. पल्सेस लाइक सोयाबीन, बीन, ग्रेन, cereal. Cereal means wheat, maize, barley. Now next is sugar crop. sugar crop कहाँ से आएगी? शुगर केन से एंड बीट रूट से. शुगर केन एंड बीट रूट. नेक्स्ट इज द tuber crop like potato. Next is the fiber crop. Fiber crop like jute, cotton. These are the fiber crop. And the oil seeds like groundnut, sunflower. These are the oil seeds. And next is the spices, timber. So spices, timber. Spices means there are several types of pepper, clove. These are known in the spices category. And next is the timber. Timber is a teak and other. So there are many types of crops on the basis of the types of food which we obtain from the crop. The crops are of several types. First is the timber, pulses, cereals, sugar crop, tuber crop, fiber, oil seed and spices. This is the types of crop plant. Next, the types of crop is the Next is the types of crops on the based of purpose. So based on purpose,
पर्पस के बेसिस पे क्रॉप्स कई तरह की होती हैं. क्रॉप टू टाइप्स की होती हैं, दैट इज फूड क्रॉप एंड सेकेंड इज कैश क्रॉप. These are the types of crops on the basis of purpose. So crop means the crop which are grown for obtaining the food are known as food crop. For example, cereal, pulses, vegetable. These are the food crops because these crops we grown for obtaining the food. That's why they are known as food crops. But cash crops means the crops which are grown for obtaining the product which are used for the selling. Means the crops which are grown for selling the products which are obtaining from the crop. जो क्रॉप से जो भी हमें प्रोडक्ट मिला है हम उनको सेल करने के लिए जब क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कैश क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल sugar cane, cotton, etc. These are the cash crops. Means cash crop produced for sale to earn money. Money को earn करने के लिए उन products को हम sale करते हैं, that is known as cash crops. Rather than for use of by the grower. इनको जो भी grow करता है वो use नहीं करता है but sale करते हैं, that is known as cash crops. To earn money, grow for earning money. Students, so this is the types of crops, and now with this topic your unit 2 agriculture is also finished. We will discuss the next